Hello, good morning students. Last we discussed about the ray diagram of double convex mirror. The remaining fourth diagram we discuss that when the object between two f1 and f1. Again we draw first one the double convex lens, that is optical center, focal length 1, center of curvature. Second the similar focus and its center of curvature, and the object between two f1 and f1, object between two f1 and f1, when the incident ray when the incident ray it passes through the focus f2. It passes through the focus f2, and from the tip of the object it passes through the optical center. It passes through the optical center. Where they meet they form the image. And image, you see again, that is real and inverted. Image again real and inverted. 4 points clear करेंगे. Object between 2f1 and f1, image beyond 2f2. 2f2 तो भी अगे है beyond 2f2, size enlarged and nature real and inverted. Now fifth point, when the object at focus f1, at focus f1, again we draw the convex lens, that is optical center, focus and center of curvature, and object at f1, AB is the object. It passes, incident ray passes, and it passes through the focus f2. Secondly, from the tip of the object it passes through the optical center, and they never meet. They form real and inverted image, because image इस साइड से बन रहा है real and inverted होएगा, and highly enlarged बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा, because image बन रही है बच्चे at infinity, and object सी साढ़े कोल f1 ते. All the points clear हो जाएंगे. Now last, that is when the object between f1 and optical center, when the object between focus 1 and optical center, that is the optical center and that is the f1 focus, and object placed here, again incident ray passes, it passes through the focus. Secondly, from the tip of the object it passes through the optical center. They never meet on this side. On the imagination they meet on the same side, and it form the image virtual and erect. If image formed on this side, then it is real and inverted, but image formed on same side, so the image is virtual and erect. Size highly enlarged हो गया. image कितने है बच्चे? f1 है, f2f1 है, beyond 2f1, image beyond 2f1, and object C between f1 and O. 6 ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ. 6 ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, 6 ਹੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ. ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਪੈਨਸਲ ਕਲੀਅਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ, now we draw the image formation by concave lens. Concave lens, first one noted that part is concave, second that is concave, and it is thinner at the center, thinner at the center, and that is the optical center focus. One thing remember, when the incident ray passes, it diverge, ये पाथ तो डाइवर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्जिंग मिरर ही लेंस ही। सो it meet at the focus, it meet at the focus, and image formed इस साइड से बन रही है, then it is nature virtual and erect। साइज देखो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है, सो पॉइंट साइज इमेज एट F1 बन रही है। ऑब्जैक्ट रेज जड़ियाँ आ रही ही फ्राम इनफिनिटी, रेज कितों आ रही, फ्राम इनफिनिटी तो रेज आ रही। ऑल द पॉइंट्स क्लीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट, when the object between F1 and 2F1, F1 and 2F1, again we draw the concave lens, that is optical center focus, and that is the object, that is the object. When the incident ray passes, it diverges, and on back side it passes through the focus. Secondly, the ray passes through the optical center. When these two lines cut, there is a image formation, and image formed on same side of the object, so it is virtual and erect, image is virtual and erect। size थोड़ा जा decrease हो गया, so it is diminished, size diminished हो गया। image between F1 and optical center, image between focus 1 and optical center, and object सी साडे कोल between 2F1 and F1। ठीक है जी, ये सारियां डायग्राम्स कनकेव एंड कन्वैक्स लेंस दियां सारियां साडे पॉइंट्स क्लीयर हो गए ने। नाउ लास्ट टॉपिक साडा इस लैसन का रह गया बच्चे, एंड दैट इज़ पावर ऑफ ए लेंस। एक्चुअली जो जिहड़े असीं हुण लेंस पढ़ रहे हैं उन्हां दी पावर की है, पावर है द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज़ टर्म्ड एज पावर ऑफ लेंस। जिहड़ी एबिलिटी दे नाल एक कन्वर्स करनगियां रेज ऑफ लाइट नूं जदों लेंस दे उपर पैणगियां तां वो जिहड़ी चेंज होएगा, कन्वर्ज होणगियां रेज, दैट इज़ कॉल्ड एज लेंस। द पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये रेसिप्रोकल होएगी किहदी, फोकल लेंथ दी, इन मीटर। स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द ग्रेटर इज़ इट्स पावर। जिन्नी घट फोकल लेंथ होएगी उन्नी ही ज़्यादा उहदी पावर होएगी। एंड वाइस वर्सा हुंदा बच्चे बिल्कुल ओपोजिट गल करनी, जिवें असीं इत्थे क्या ग्रेटर इज़ द पावर, बट मैं इत्थे कहा स्मॉलर इज़ द पावर, then greater is the focal length, reciprocal, that is vice versa। and power is represented by P equal to 1 over F। if power increases, focal length decreases, if focal length increases, the power decreases। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड SI यूनिट जो पावर का ना, दैट इज़ ए डायप्टर। SI unit of power is diopter। Diopter is the power of a lens having focal length 1 meter। If any question asks you that what is a diopter, diopter is the unit of power and is the power of a lens, power lens the having focal length 1 meter होएगी।
1 मीटर होएगी then it is diopter. And for convex lens focal length is positive. जिन्नियां भी असी डायग्राम देखिया बच्चे लास्ट फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वैक्स लेंस की गल करिए तो ये सारिया अगली साइड पर बनिया हुई ये अदर साइड बनिया ऑब्जैक्ट की अदर साइड एंड वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्राम द ऑप्टिकल सेंटर एंड वी मूव टू द राइट सो इट इज़ पॉजिटिव पॉइंट क्लियर होएगा पावर. So the power is positive. Focal length of convex lens is positive. But for concave lens, focal length is negative. Focal length negative है, so its power is negative. See here, for concave, the focal length is on this side, and when we move from the optical center to the focus we move towards the left, so it has a negative sign. So concave lens focal length is negative, so the power is negative. हाँ बच्चे मे भी मेरे हिसाब के नाल इत्थों तक सारा कुछ साडा क्लीयर हो जाएगा. नैक्सट वन न्यूमेरिकल है, कोशिश करते हैं उन्होंने अंडरस्टैंड करने की. न्यूमेरिकल है एक concave lens of focal length 25 cm and convex lens of focal length 20 cm are placed in contact with each other. दोनों लेंस एक दूजे के नेड़े रखे हुए ने. वट इज़ द पावर ऑफ दिस कंबीनेशन, तो ये पावर ऑफ कंबीनेशन की है. आलसो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कंबीनेशन, फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है. एंड द कंबीनेशन एक्ट एज विच टाइप ऑफ लेंस, तो जो कंबीनेशन हो जाएगा किस तरह का लेंस साढ़े कोल बनेगा. फर्स्ट वन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस. हुणे दस्सिया बच्चे कनकेव लेंस वास्ते फोकल लेंथ की होनी ही नेगेटिव एंड इट इज़ गिवन 25 सेंटीमीटर. वी कैन राइट -25 सेंटीमीटर. एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस F2 इक्वल टू की हो जाएगी साढ़े कोल +20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये इमेज ये अगले पासे बनेगी, राइट हैंड साइड से बनेगी. एंड पावर बच्चे देखो जो असी 20 सेंटीमीटर लै रहे हैं टोटल 100 की गल कर लाँगे. पावर इक्वल टू साढ़े को आंदा ही 1/f. हुण इत्थे फोकल लेंथ कितनी है -25, असी 100 उपर रखिया बिकॉज दे आर टेकन इन सेंटीमीटर. -4 एंड फॉर कन्वैक्स लेंस इट इज़ +5t. पावर ऑफ कंबीनेशन हुण क्वेश्चन है साढ़े कोल वट इज़ द पावर ऑफ कंबीनेशन. टोटल पावर इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 दैट इज़ +1 डायप्टर, +1 डायप्टर आ जाएगा. एंड फोकल लेंथ ऑफ कंबीनेशन फाइंड आउट करनी है, तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकली पावर दे 100/पावर साढ़े कोल कितनी आई है 1, अगेन 100 सेंटीमीटर आ जाएगी और 1 मीटर भी कह सकते हैं. ठीक है. नैक्सट द पॉजिटिव साइन. हुण ये फोकल लेंथ का किहड़ा साइन आ रहा बच्चे पॉजिटिव साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर. फोकल लेंथ एंड पावर शोज़ दैट लेंस इन कंटैक्ट बिहेव एज कन्वैक्स लेंस. पॉजिटिव साइन आ रहा तो फिर साढ़े कोल किहड़ा लेंस बनेगा कंटैक्ट लेंस, कन्वैक्स लेंस बनेगा. ठीक है, किहड़ा लेंस बनेगा कन्वैक्स लेंस. इफ़ वी हैव नेगेटिव साइन, जो मेरे को नेगेटिव साइन आंदा ही आएगा दैन वी हैव कनकेव लेंस. ठीक है जी, ऑल द पॉइंट्स क्लीयर हो जाएंगे बच्चे. इस वीडियो को जिन्ना क्लीयर होएगा 2 और 3 टाइम देखना. पहले इसकी वीडियो PDF भी पाई हुई है, उन्होंने राइट करो दैन वीडियो देख लियो, सारे ही पॉइंट्स क्लीयर हो जाएंगे. थैंक यू.